Welcome student in Christchurch Convent Digital Classes, subject chemistry, class 11th, chapter 4, chemical bonding. In this video we'll see about polarity of bonds. As you all know, see on the right hand side, the existence on a 100% ionic or covalent bond represent an ideal situation. किसी मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड का पाया जाना एक आदर्श स्थिति है, ठीक है। इन रियलिटी नो बॉन्ड और कंपाउंड इज़ आइदर कम्प्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। पर वास्तव में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है केमिस्ट्री में जो पूर्ण रूप से कोवेलेंट हो या आयनिक हो। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं और आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। इवन इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके या एटम से मिलके बने हुए मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन और H2 गैस, O2 गैस, क्लोरीन गैस, N2 गैस और F2, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बने हुए हैं। फिर भी इनमें द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली अट्रैक्टेड बाय द टू एटम्स। जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से दोनों एटम्स के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं। एज अ रिजल्ट, सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर is situated exactly between the two atoms, between the two identical nuclei. The bond so formed is called non-polar covalent bond. इस तरह से बना हुआ बॉन्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। द बॉन्ड सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कॉन्ट्रेरी, इसका अपोजिट क्या है, इसके विरोध में क्या है? Contrary to this, in case of a heteronuclear molecule like HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल में दो अलग अलग नॉन मेटल हैं, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण क्या होता है? The shared pair of electron between the two atoms get displaced more towards fluorine since the electronegativity of the fluorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is a polar covalent bond. तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा क्लोरीन एटम की तरफ खिसक जाता है, जिसके कारण पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इस पोलराइजेशन के कारण द मॉलिक्यूल हैव डायपोल मूवमेंट। प्लस माइनस बनने के कारण जो HF मॉलिक्यूल है उसमें डायपोल मूवमेंट आ जाता है या डेवलप हो जाता है, विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डायपोल मूवमेंट की परिभाषा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज and the distance between the center of the positive negative charge. So it is denoted by a Greek letter mu. Mathematically it is expressed as follows: dipole movement, see on the left hand side, dipole movement mu is equal to charge q into distance of separation of charge. Dipole movement is usually expressed in dBi units. It is also denoted by capital D. The conversion factor is 1 dBi unit is equal to 3.33564 into 10 raised to power minus 30 कूलाम मीटर। C मतलब कूलाम, M मतलब मीटर, where C is a coulomb, C is a unit of charge which is called coulomb, and M is the meter, a unit of distance. As you can see, the polarity developed on the fluorine molecule, hydrogen fluoride molecule. We all know that dipole moment is a vector quantity and
we know that in vector quantity magnitude and direction are both important. So but in chemistry the presence of dipole moment is represented by the cross arrow. Put on Lewis structure of the molecule, the cross is on positive end, the arrowhead is on negative end. For example, the dipole moment of HF may be represented as shown in the diagram. This arrow symbolizes the direction of shift of electron density in the molecule from in case of HF from hydrogen towards fluorine. Note that the direction of the crossed arrow is opposite to that of conventional direction of dipole moment vector. Here also the information about is given about the Peter Debye. The Dutch chemist received Nobel Prize in 1936 for his work on X-ray diffraction and dipole moments. The magnitude of the dipole moment is given in the Debye units in order to honor him. Debye unit. We have seen 1 Debye unit is equal to 3 into 3 is equal to 3.33564 10 raised to power minus 30 coulomb meter. So see on the right hand side paragraph, in case of polyatomic molecules the dipole moment not only depends upon the individual dipole moment of the bonds known as bond dipole but also on spatial arrangement of various bonds in the molecule. In such case, the dipole moment of a molecule is the vector sum of the dipole moments which has a bent structure. For example, the two OH bonds are oriented at an angle of 104.5 degree. Net dipole moment of 6.17 into 10 to the power minus 30 coulomb meter is the resultant of the dipole moment of the two OH bonds, which is shown in figure A and B. So net dipole moment mu is equal to 1.85 Debye unit. Capital D means Debye. The dipole moment in case of BeF2 is 0. This is because the two equal bond dipoles point in opposite direction and they cancel the effect of each other. So in case of beryllium difluoride, the net dipole moment is 0. In tetraatomic molecules, for example in BF3, these are triatomic molecules, the dipole moment is 0 although the bond present between boron and fluoride are oriented at an angle of 120 degree to one another. The three bond movements are give the net sum of 0 resultant of any two of the is equal to the opposite of the third one. As you can see in the diagram, राइट हैंड साइड में जो दो फ्लोरीन एटम है उनका रिजल्टेंट उनके बिल्कुल बीचों बीच से जा रहा है और बीचों बीच से जाने के कारण वो लेफ्ट हैंड साइड के फ्लोरीन के कारण जो डायपोल मूवमेंट जनरेट हो रहा है उसके कारण अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहा है. Now let us see an interesting case of NH3 ammonia and NF3 molecule. Both the molecule have pyramidal shape with a lone pair of electron on nitrogen atom. Although fluorine is more electronegative than nitrogen, the resultant dipole moment of ammonia NH3 is 4.90 10 raised to power minus 30 coulomb meter is greater than that of nitrogen trifluoride. This is because in case of ammonia the orbital dipole due to lone pair
is in the same direction as the resultant dipole movement of the NH bond, whereas in NF3 the orbital dipole is in the direction opposite to the resultant dipole movement. तो डायपोल में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, as you can see in the figure. The dipole movement are depicted by the double crossed arrow in case of ammonia and NF3 nitrogen trifluoride. So you can see in the diagram also, in ammonia the resultant dipole and which is shown by black headed arrow, and the presence of lone pair electron in the nitrogen atom which shown with blue color in the same direction. So its resultant dipole is high, 4.9, but in case of NF3 the dipole due to lone pair of electron is downward, and the resultant dipole movement due to 3-fluoride atom is upward. So due to opposite direction they nullify the effect of each other up to some extent, and the resultant dipole of NF3 become 0.80. So dipole movement of some molecules are shown in table 4.5. Just as all the covalent bonds have some partial ionic character, the ionic bonds also have partial covalent character. The partial covalent character of ionic bonds was discussed by scientist Fazan's rule. In terms of the following rules by Fazan's in terms of the following rules. So these rules are given by Fazan, and what are the rules? The smaller is the size of cation and the larger is the size of anion, the greater the covalent character of an ionic bond. यदि कैटायन मतलब धन आयन का आकार छोटा हो और एनायन का आकार बड़ा हो, मतलब ऋण आयन का आकार बड़ा हो, नेगेटिव आयन का आकार बड़ा हो, साइज़ बड़ी हो, तो आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होता है. फिर दूसरा रूल है द ग्रेटर द चार्ज ऑन द कैटायन एंड द ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड. यदि कैटायन पे ज़्यादा चार्ज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा. आयनिक बॉन्ड है उसके बावजूद उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. For cation of the same size and charge, the one with electronic configuration n-1d n ns0, typical of transition metal, is more polarizing than one with noble gas configuration, typical of alkali and alkaline earth metal cations. So the cation polarizes the anion, pulling the electronic charge towards itself. कोई भी धन आयन किसी एनायन को या नेगेटिव आयन को पोलराइज कर सकता है. कैसे? न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को अपनी तरफ खींच के, thereby increasing the electronic charge between the two. This is precisely what happened in the covalent bond, that is the buildup of electron charge density between the nuclei or between the two nucleus, that is anion and the nucleus of anion and cation. The polarizing power of the cation, the polarizability of the anion, and the extent of distortion or polarization of anion are the factors which determine the percent covalent character of the ionic bond. तो आयनिक बॉन्ड जो है मुख्य रूप से एनायन की पोलराइजेबिलिटी पावर पर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ डिस्टॉर्शन और पोलराइजन पर डिपेंड करता है, और पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पर डिपेंड करता है. In next video we will see the theory about the valency cell electron pair repulsion theory. So thank you for watching. See you in the next video.